अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हमने अपनी क्लासेस शुरू की थी तो हमने ये कहा था कि हम ग्रामर के हर जो उसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको हम हल्का हल्का सा टच देंगे और उसके बाद हम इसको तकरीबन डिटेल में जाएंगे। तो आज से हम अपना दोबारा टेंसेस शुरू कर रहे हैं और ये टेंसेस शुरू करने का सबब ये है कि बहुत से लोग स्टूडेंट्स मेरे पास हैं जो यकीनन बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो लेकिन वो उनको खुद ग्रामर की अवेयरनेस नहीं होती है। अ, उनको उस ग्रामर की अवेयरनेस देना मकसूद है। कुछ मैसेज भी मेरे पास आए कि टेंसेस को आप रिपीट कर दें, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस टेंसेस को रिपीट कर दूँ। और एक चीज़ और, अब तक हमने तमाम जो अपनी ग्रामर है वो उर्दू में लेक्चर डिलीवर किया था और अब जो डिलीवर होगा लेक्चर हमारा, दिस विल बी सम टाइम विल बी इन उर्दू एंड सम टाइम विल बी इन इंग्लिश, so that those students who are not well aware about the grammar, they may also be better able to know and to understand the rules and regulations, the mechanics of the grammar in English. अब जिसके मैं अपना वीडियो शुरू करूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि इससे आपको भी फ़ायदा हो और हमारी भी हौसला अफजाई हो। तो लेट्स गो टू द टॉपिक। Today I am going to start my new, the first tense, that is the present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जैसा कि अक्सर लोग समझते हैं कि जुमले के आखिर में ताहे तीहे आता है, तो दिस इज नॉट आइडेंटिफिकेशन। ये पहचान नहीं है कि किसी जुमले में ताहे आता है या तीहे आता है। तो ऐसे जुमले, द सेंटेंसेस विच शोज द हैबिचुअल एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, I go to office, he goes to shop, I play cricket, he plays, he goes to market, he plays football, etc., etc. So such sentences which shows the habitual action of the subject is called present indefinite. And parallel to this, the second definition of present indefinite is the universal truth. Uh, it rains, the sun rises from east. These are all the natural phenomena. तो वो तमाम चीज़ें जो कुदरती फिनोमेना हो, वो तमाम चीज़ें जो कुदरती फिनोमेना हो, जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जो दूसरी पहचान, जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट की आदत का पता चले, तो सच सेंटेंसेस विल बी ट्रांसलेटेड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान तायत इज नेवर नेवर राइट, ये बिल्कुल गलत है, ये कतम गलत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान तायत ये नहीं होती। ओनली दो सेंटेंस which shows the habit of the subject or the sentences which shows some universal truth, some historical reality, such sentences will be considered as the present indefinite. और present indefinite के बनाने का तरीका हमारे पास यह है कि firstly you will have to place subject, and after the subject if the sentence is affirmative, अगर ये subject आपका जुमला आपका ये affirmative है, बयानिया है, then we will place the first form of the verb and finally we will have to put the object. This is the affirmative. This is the affirmative, means assertion, statement, only statement, not denial, not acceptance, but just a statement. Suppose I play cricket. I play cricket. He plays cricket. In the same way, now she goes to market. She goes to market. अब इसमें देखना यह है कि सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन वाहिद हो, आई हो, और इट्स प्लूरल वी, सेकंड पर्सन यू, और इट्स प्लूरल यू, एंड इफ द थर्ड पर्सन ऑफ द प्लूरल, if these are the subjects, suppose हमारे पास सब्जेक्ट है आई, we have subject you, singular or plural, or we have the subject third person plural, then the first form of the verb will be used in its original form, means without addition of s or es. यानी हम s पहले प्ले इस्तेमाल करेंगे इन सब सब्जेक्ट्स के साथ, s या es के बगैर। दैट्स कॉल्ड ओरिजिनल ट्रू फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। नाउ हियर
he plays cricket, third person singular. She goes to market, also third person singular. Both sentences are from the present indefinite. और इसके बावजूद आप देखें कि ही के साथ हमने एस लगा दिया और शी के साथ हमने ई एस लगा दिया. मेनी ऑफ द स्टूडेंट नो इस वेल कि इस तरह से एस और ई एस की एडिशन होती है, बट दे मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली दे डोंट नो व्हाई द एस इज पुट हियर एंड व्हाई ई एस इज एडेड हियर. तो भाई उसका उसूल ये है हमारे पास कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, यानी ही कोई एक लड़का, शी कोई एक लड़की, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब है अगर वो वाई, टी, पी, क्यू, एम वगैरह वगैरह पे खत्म हो तो हम खाली एस का इजाफा करेंगे. और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और उसके बाद आने वाला वर्ब इफ इट एंड्स ऑन ओ, एक्स, एस एच, सी एच और एस एच पर हो, देन ई एस विल बी एडेड. तो हमारे पास अगर इस किस्म के जुमले होंगे, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, उसके बाद आने वाला वर्ब ओ पर खत्म हो, एच डबल एस, एस एच सी एच, एक्स पर खत्म हो, तो हम वहां पर ई एस लगाएंगे. इसके सिवा हम एस लगाते हैं. दिस इज द बेसिक रूल. नाउ द प्रेजेंट इंडेफिनिट हैज बीन कंप्लीटेड, बट इट इज ओनली द अफर्मेटिव फॉर्म. अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में यू नो प्रेजेंट इंडेफिनिट डज नॉट हैज any helping verb in its affirmative form. To make it negative form, we have to use subject. Subject के बाद आता है do not और does not. Do not और does not आता है, और आखिर में object. Let me clear. Does itself, does is not a true word of the English. It is the ramification, it is the form, it is a kind of do, and it is actually do, but after addition of es we consider this does. So does itself is not the true word of English. तो does आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. अगर हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ही कोई लड़का हो और शी कोई लड़की हो तो हम उसके साथ does लगाते हैं, और जब does आता है तो इसका जो एस और ई एस होता है, it goes to the helping verb and become do as it does. तो वो do से does बन जाता है इसकी एडिशन के बाद, और फिर वर्ब की फॉर्म असली हालत में आती है. मतलब यह हुआ कि he does not play cricket. अब देखिए यहां डी ही आया और ये डज नॉट आया. जब डज आया ये जो एस था ये इसके डू में कन्वर्ट हो गया. जब ये डू में कन्वर्ट हो गया तो अब जो फॉर्म है असली हालत में हमारे पास यहां आ गई है, और इस तरह से ये हमारे पास सवाल है. यही रूल यहां अप्लाई होगा. शी डज नॉट गो टू मार्केट. और यहां चूंकि ये सबके साथ है, सिर्फ अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई, वी, यू वाहिद जमा और दे होगा, देन आई डू नॉट, इन सब के साथ डू नॉट आएगा और प्ले क्रिकेट. अगर हम इसको इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं, टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू क्वेश्चन सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, so we will have to put the helping verb before the subject. Very simple. There is no changing except the placement of the helping verb. सिर्फ do और does को आप सब्जेक्ट से बाहर, यानी कि do I play. अब ये जब मैंने I कह तो I के मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि सब फर्स्ट पर्सन आई, वी, यू ये सब एक ही चीज है, और do I. और अगर थर्ड पर्सन के साथ होगा तो does will have to be put outside the subject. तो does यहाँ हो जाएगा, और डस के बाद शी गो टू मार्केट. आप ये देखें कि जब हमने हेल्पिंग वर्ब डज इस्तेमाल किया, नेगेटिव में किया या सवालिये में किया, देन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द गो कम्स, और एस और ई एस था इसका जो अफर्मेटिव था, इट ट्रांसफर्स टू इस हेल्पिंग वर्ब. ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में आ गया और रिजल्टेंटली जो गो है असल फॉर्म हमारे पास आ गया. तो ये बात तो ये हमारे पास अब तक क्लियर आ गई कि प्रेजेंट डेफिनेट में वो टेंसेस कंसीडर किए जाते हैं विच शोज द हैबिट ऑफ द सब्जेक्ट एंड विच शोज द यूनिवर्सल ट्रुथ
रियलिटी। इसके सिवा हमारे पास दो तरह तीन तरह की चीज़ें और होती हैं जहां हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने लिखा है याद दहानी के लिए कि कोई ड्रामेटिक नरेटिव होगा, कोई ऐसी नरेशन, कोई ऐसा बात हम बयान करेंगे जो किसी ड्रामे से रिलेटेड हो, फिल्म हो, कोई कोई नॉवेल का हिस्सा हो। तो उसमें मसाल में मैं आपसे कहता हूं कि किसी ड्रामे का सीन बताता हूं। व्हेन ही कम्स as the curtain rises, as the curtain rises, जैसे ही पर्दा उठता है, जूली एंड रॉबर्ट कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड, जूली और रॉबर्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि हमने कोई ड्रामेटिक जो नैरेटिव था, जो ड्रामेटिक नरेशन था, तो इसके मतलब यह हुआ कि इन प्रेजेंट इंडेफिनेट we can not only use we not only use actually the habitual action or the historical reality, but also some narrations, some dramatic narratives are also stated in the sentences। ये as the curtain, जैसे कि पर्दा उठता है, अगरचे ये भी वही चीज है कि उठता है और ये हैबिचुअल वर्क हो जाता है, लेकिन एक अलग से उसकी कमेंट्री में एक कमेंटेटर है, वो कहता है कि द बॉल इज in the hand of Shehnaz Sheikh. Shehnaz Sheikh goes forward. He transferred the ball to Samiullah. Samiullah is going forward, and he pushed the ball to the Hanif Khan and other. तो इस तरह से जो कमेंट्री होती है उसमें भी हम इसको टेंस को यूज करते हैं। और कोटेशन में जैसे मैं आपसे कहूं कि रॉबिन हुड सेज loot the rich and give to poors। मैं आपसे कहता हूं कि शेक्सपियर सेज do not borrow and not lend, या not to be borrower, not to be lender। तो इस तरह के जुमले जो हमारे पास होते हैं, तो कोई कोटेशन हो, कोई कमेंट्री हो, या कोई ड्रामेटिक नरेशन हमारे पास मौजूद हो, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट उसमें इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ द प्रेजेंट इंडेफिनेट आई हैव taught you here in detail। Present definite is not only used in those sentences which shows the habit of the subject. Present definite is not only used in those sentences which shows the natural phenomena, but also dramatic narratives, commentary, and quotations also use present indefinite। So now present indefinite is completed।